महाराज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ. So प्रदीप जी, we are starting again. Yes, sir. Namaskar, namaskar. And hopefully this time there won't be a glitch. Yes, they won't. Right? आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय. मेरा ये कहना है कि साहब, नेशन नाउ पर हमेशा हम लोगों ने सच बात की है और सीधी सादी बात की है. आज तक कभी हम लोगों ने वी हैव नेवर मिन्स्ड वर्ड्स. प्रदीप जी, a very shocking incident unfolded just fairly recently, and I think perhaps Mr. Abhishek Mishra can throw some light on it. I'm not sure if he will, or even if he knows about it, but if he doesn't, we'll inform him. Abhishek Mishra ji, namaskar. Namaskar. How are you, sir? How are you? Wonderful, wonderful to see you. We saw your love. We keep seeing your lovely posts, on Facebook and elsewhere. You were at the India Today conclave and stuff like that. Yes, I'm at a conclave. Wonderful. I've come out for your show. Thank you so much. And which is why that wonderful lighting. I was wondering who's done the studio lighting. The concert studio mein in fact when I came in, I asked ke Abhishek ji kaun se studio mein hai is waqt, because the lighting is so perfect and so beautiful. This is the Grand Hyatt Hotel जहाँ conclave है, वहाँ एक Yes. business center में मुझे room लेना पड़ा है. Business center में room लेना पड़ा है. Very just 5 minutes away from our office. Yes. अपने ऑफिस के सिर्फ 5 मिनट दूर है. अच्छा सर, आपके ऑफिस में ही बुला लेते, आपके ऑफिस में बुला लेते आप. That would have been so wonderful. Oh God, we should have got you in the office. It would have been so lovely. You would have been in the studio and we would have been talking over here. But the only thing is, going back would have been a problem, because even though it is 5 minutes coming, on the way back it would have taken you over 45 minutes to get there because the traffic is horrid. Yes, I have to attend a session. I have to attend a session after this. बुलेट ट्रेन का काम चालू है, full पूरा बुलेट ट्रेन का काम चालू है. एक फ्लाईओवर अभी पूरा नहीं बना है. नेटवर्क्स का काम चालू है. I think there are 3 flyovers being built. 2 are almost complete, but a lot of construction going on over here. When it gets completed, the whole place will be like Singapore, Tokyo. I mean, they'll pale into comparison with what BKC will look like. But Abhishek Mishra ji, I would like to ask you a question. I don't know whether you are aware of this incident, but let me inform you. सर, 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में वार्म अप मैच था हैदराबाद में, जिसमें कमेंट्री कर रहे थे मैथ्यू हेडन साहब और रमीज राजा साहब. मैथ्यू हेडन साहब ये कहते हैं, while commentating, Hayden emphasized that he greatly admires that the Pakistani cricket unit is very well focused on Islam and it has made them disciplined. The Australian opener also stressed that the Islamic way of life gives a lot of discipline. That's what Matthew Hayden said while commentating in a warm-up match to the World Cup. Ramiz Raja is there, of course, and Ramiz Raja extolled the virtues of Islam. Now, I take you back to an incident when our captain MS Dhoni, then captain MS Dhoni, who was an honorary colonel in the paras, he wore that's insignia of the paratroop regiment on his gloves, and he was forced to take those gloves off. Sir, ये क्या हो रहा है, अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, there is a concentrated effort being done that the Sanatan Dharma and India as a country does not become a major global power. Yes. So they realize that the power of India lies in its civilizational values, lies in Sanatan Dharma. The unity of India, the integrity of India lies in the Sanatan Dharma culture which has been passed through lakhs of years. So there is an effort being done at the global stage that to discredit India, you discredit the Sanatan Dharma. You discredit Indian custom, culture, Hindu values, Bharatiya Sanskriti. And in that agenda, many a times, even countries, which are not our enemies of any sort, but they also become victim of the agenda. So Ramiz Raja has been the former chief of the Pakistan Cricket Board. Matthew Hayden definitely must have come under some kind of influence or other. And But he was batting coach of the Pakistani team. He used to be batting coach. He must have come under some influence. And the sad part is, when they sign contracts for global events like the World Cup, yes, they have to give in writing that they will not make any comment on religion, race, nationality, ethnicity, racism, etc., on gender. So then to make a comment or extolling Islam is not the part of a commentary in a World Cup. So definitely the BCCI should take this up and report to the ICC that why are there double standards if MS Dhoni, he does something to extol the values of Indian Dharma, Bharatiya Sanatan Dharma, Sanskriti. He's been called that this is not sporting behavior.
But if Matthew Hayden starts unnecessarily extolling a religion during a warm-up game, this is taken as normal practice. So there cannot be double standards. So I think what Hayden and Raja have done, this is not fit for a sporting activity. If they want to do this, they should go to a mosque, they should go to some place, masjid or some Islamic center. There Matthew Hayden is free to speak all the virtues of Islam he wants, but he should do this in a mosque, in a Islamic center, in a Islamic seminary, not using the Cricket Yes. World Cup and his commentary, his position as a commentator to do his Islamic preaching. He is free to preach in Islam. He can go to all the mosques in Pakistan with Raja, and every mosque and seminary, Matthew Hayden should preach Islam if he wishes to, that is his desire, but not during Cricket World Cup, not using his post as a commentator, and not trying to misguide or not trying to influence the millions of people who are fans of the sport. Absolutely, and now there are demands that both these chaps should be banned from doing any Yes. further commentary. And that, Yes, they should be banned. Yes. And Raja should take Hayden to Pakistan, to Karachi, Islamabad, Lahore, Rawalpindi, Sialkot, all these places, and take him to mosques where Hayden can keep speaking good things about Islam. especially to Khyber Pakhtunkhwa, Yes, especially yes. to Khyber Pakhtunkhwa, where he can preach in a mosque every Friday. Yes. And hope he survives all the bomb explosions that will be there and welcome him. Absolutely, I agree with you. I agree. But this is absolutely awful. What I'm trying to say is this is absolutely awful. Number two, the Prime Minister recently, just this morning, praised the Vaccine War, the movie. VIVEK AGNIHOTRI साहब की जो picture है, where he said, I haven't seen the movie, but I've been told that the movie actually documents the heroic effort put in by Indian scientists into developing an indigenous vaccine against COVID. अब उन्होंने तो ये कह दिया, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में अगर कोई पिक्चर प्रशंसा करती है तो बाकी सब लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बताएं सर, अभिषेक मिश्रा जी। Yes, इसमें इसका कारण ये है कि एक भारत में एक लेफ्टिस्ट, एक इंटेलिजेंसिया ऐसा बना हुआ है आजादी के बाद से, और एक ऐसा इंटेलिजेंसिया है जो केवल सब कुछ सोचता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके पास अच्छाई है। तो ये लेफ्टिस्ट इंटेलिजेंसिया और ये जो वेस्टर्न स्लेव्स है अभी भी मेंटली, इन दो ने ऐसी धारणा मन में बना रखी है कि भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत एक पिछड़ा राष्ट्र है, और जो होगा या तो कम्युनिस्ट कंट्री जो लेफ्टिस्ट मानते हैं उनमें होगा, या जो वेस्टर्न भक्त से स्लेव से वेस्टर्न वर्ल्ड के वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और यूके को मानते हैं। तो जब भारत कुछ अच्छा करता है तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो स्वयं पे सेल्फ डाउट, ये लोग बेसिकली स्लेवरी माइंडसेट से ग्रसित हैं, सेल्फ डाउट से ग्रसित हैं। इन लोगों को लगता है कि भारत में क्षमता की कमी है, भारत में वो सामर्थ्य की कमी है, भारत के वैज्ञानिकों में बुद्धि, ये बेसिकली देश के अंदर जयचंद का काम कर रहे हैं, ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये भारत के विज्ञान, भारत की शक्ति, भारत का साहस, और ये भूल जाते हैं कि विश्व ने विज्ञान भारत से सीखा। पाई का जो रेशियो है, जीरो का आविष्कार है, आपके मैथमेटिकल थ्योरम्स जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, जो पाइथागोरस ने लिया कहां से? भारत से, आर्यभट्ट से लिया। जी। जो अर्थ और सन के बीच में डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है भारत अर्थ और मून के बीच में, ये सब भारत के वैज्ञानिकों ने दिया था, और ये ग्लोबली साइंटिफिक एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो भारत विश्व को पाई का रेशियो, जीरो, मैथमेटिकल सम्स, आपका डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, मून एंड द अर्थ, ये सब दे सकता है, परंतु भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन, इनके नजरों में ये लोग ऐसे हैं कि क्योंकि इसका कारण, अब असली कारण जाए, ये इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत की सनातन संस्कृति में वो ताकत थी कि वो पूरा विज्ञान विश्व को दे सका। तो सनातन संस्कृति को नकारने के चक्कर में ये हमारी शक्ति, हमारा इतिहास भी भूल जाते हैं, हमारे साइंटिफिक अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, और ये कहते हैं क्योंकि भारत पहले कुछ नहीं कर पाया इसलिए भारत अभी भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो भारत के वैक्सीन के प्रशंसक नहीं बन पाते। वो कहते हैं भारत वैक्सीन पहले भी कहते नहीं बना पाया, जब बना दिया तो वो कहते हैं हम तारीफ नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। तो ये लेफ्टिस्टों का और जो पाश्चात्य जगत के मानसिक गुलाम है, उनकी ये कमजोरी है कि भारत की तरफ वो आंख बंद कर चुके हैं, और वो केवल चीन या अन्य देशों की तरफ देखते हैं, पाश्चात्य देशों की तरफ, कि जो होगा वहीं से आए। अच्छा, यही योग जब यहाँ सिखाया जाता था तो इनको लगता था कि ये योगा तो क्या है, अब वही योग अमेरिका में लोग सिखा रहे तो कहता है योगा स्कूल। अब इस गुलामी मानसिकता का इलाज क्या करे कोई व्यक्ति? But over here I must say this, before I hand over to Pradeep ji, here I must say this, I don't know if you have read a lovely book
It's huge, by the way. It's a huge book, edited by Stephen Hawking. It's called "And God Made Integers." And God made integers. It is all about the great mathematicians of the world, where Stephen Hawking actually relates the story of the Pythagoras theorem and how it was in fact discovered in India, and the Greeks got it from India, and Pythagoras had actually traveled to India. That's where he got it from. So it is not as if it has not been acknowledged by people. Ji Pradeep, Yes. please go ahead. You know, अभी बिहार सेंसस, बिहार कास्ट सेंसस 84% ओबीसी एससी प्लस एसटी मिलके 84%। सबसे ज्यादा खुश है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का कहना है कि जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी उतना हक। एंड ही सेज अगेन, वही कहा कि देश में 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी है। ओबीसी का एम्पावरमेंट एब्सोल्युटली जरूरी है, जातीय जनगणना जरूरी है। मोदी साहब इससे भाग रहे, ही इज मूविंग। मगर मोदी साहब का कहना है कि सबसे बड़ी आबादी है गरीबों का, और मैं गरीबों का सेवा करता रहूंगा। नाउ दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। नाउ वेयर, हाउ डू यू इंटरप्रेट मोदी जी किस प्रकार से कहा, और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी इज रनिंग अवे फ्रॉम कास्ट बेस्ड सेंसस। अभिषेक मिश्रा जी। राहुल गांधी, मैंने पिछले डिबेट में भी आपके कहा था, राहुल गांधी की एक लेगेसी है। वो लेगेसी है, मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा था कि मेरा एक सपना है कि जवाहरलाल को कांग्रेस का अध्यक्ष मेरे बाद, पिता कह रहा है कि आजादी बाद में मिलेगी, मेरे बाद अध्यक्ष बना दीजिए मेरे बेटे को। जवाहरलाल जीते जी क्या कहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष बना दीजिए मेरी बेटी को। बेटी इंदिरा गांधी क्या कहती है, मेरे जीते जी राजीव बनेगा महासचिव कांग्रेस का। राजीव जो है, जब वो जाते हैं तो सोनिया को, सीताराम केसरी एक ओबीसी को भगा के बना दिया जाता है सोनिया जी को अध्यक्ष। सोनिया जीते जी क्या कहती है, कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल बनेगा। राहुल अध्यक्ष रहते हुए कहते हैं मेरी बहन बनेगी महासचिव। अब आप बात सुनिए, ये इनका लेगेसी है। लेगेसी है कि सत्ता मेरे परिवार में और भारत देश का कुछ भी हो जाने को मतलब। तो राहुल गांधी एक व्यर्थ का व्यक्ति है। मोतीलाल नेहरू से लेकर 100 साल तक भारत देश एक तरह से इनके पाप को सह रहा है। मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब कब तक चलेगा? तो ये तो कुछ ना बोले कम से कम। और जहां तक मोदी जी ने जो महान बात कही है कि इस प्रकार धर्म को, हमारी संस्कृति को जाति में न बांटा जाए। हमारे संविधान में लिखा है कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में लिखा है। तो जी, ये बात भी सच है कि सभी जातियों को सही रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए। सभी बैकवर्ड कास्ट है, मोदी जी ने ओबीसी कमीशन बनाया, तो ये बात है कि सभी एससी एसटी हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, सवर्णों में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जनरल कास्ट में, सबको अपने भारत देश सबको हक देता है, सबको, हमारा संविधान सर्वोपरि। परंतु वो कास्ट सेंसस की आड़ में कास्टिज्म बढ़ाना, ये संविधान के स्पिरिट के खिलाफ। संविधान में लिखा है कि एवरी सिटीजन शुड वर्क फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सरकार का दायित्व है कि सभी कास्ट को, क्योंकि कास्ट भारत में रियलिटी है, सभी कास्ट को हक मिले, न्याय मिले। ये तो सरकार मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा कल्याण किया है, एसटी राष्ट्रपति। अभिषेक मिश्रा जी, ये तो हुआ। प्रियंका गांधी जी स्वयं है, सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के ओबीसी हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी हैं। तो सभी जातियों को सम्मान तो दिया, लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि हक तो सभी जातियों को मिलेगा, लेकिन जातिवाद का जहर मत घोलिए, जो ये कांग्रेस और इंडिया INDIA अलायंस करना चाह रहे हैं। इसके सख्त विरोध में मोदी जी है, और मोदी जी देश को बचा रहे हैं। मोदी जी संविधान के स्पिरिट को बचा रहे हैं कि संविधान का स्पिरिट है कि देश को एक रखिए, देश को मजबूत रखिए, सबको हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, लेकिन जातिवाद जबरदस्ती बांटने के लिए मत प्रयोग कीजिए। जाति से प्रियंका गांधी जी, अभिषेक जी, प्रियंका गांधी जी was campaigning in Madhya Pradesh. She says the Prime Minister talks about providing justice. He talks about justice everywhere, but मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला हुआ था। व्यापम घोटाला, प्रियंका गांधी जी का कहना है, व्यापम घोटाला, 50 लोग मरे, 50 लोग, people were in questionable death of 50 people. And she further says, यहाँ ईडी का एनफोर्स क्यों नहीं हुआ, यहाँ ईडी लोगों के घर में क्यों नहीं गए, यहाँ ईडी ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया व्यापम घोटाले में। तो जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, उन्होंने कहा कि पिछले 18 साल में 250 घोटाले, प्रियंका गांधी जी का कहना है 250 घोटाले हुआ है मध्य प्रदेश में, बट ना ईडी
Now any central agencies, now proper justice has been got. Why is that, sir? Abhishek Mishra ji, just because BJP ruled गांधी state. जी को जस्टिस दिलाना चाहिए, जस्टिस दिलाना चाहिए उन किसानों का जिसका जमीन उनके पतिदेव रॉबर्ट वाड्रा ने हड़पा है। तो मैं प्रियंका जी को आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप जस्टिस की लड़ाई लड़ी, भारत की हर महिला बेटी को जस्टिस की लड़ाई लड़नी चाहिए। और प्रियंका गांधी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जमीन आपके पतिदेव ने लूटा है, जिस पे उन पे केस चल रहा है, जो जबरदस्ती महंगे सस्ते दामों में खरीदा गया रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा, प्रियंका गांधी उन लोगों को हक दिलाएं, अपने पति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं, उनको सारी सच्चाई पता है। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी अभी तक हुआ क्यों नहीं है? दिलवाए तो आपके चैनल से मैं चाहता हूं आप कांग्रेस पार्टी को टैग करें, और मेरा रिक्वेस्ट है प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश जाके झूठी बातें फैलाने के बजाय रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन हड़पी है, जो उनको सारी जानकारी है, गरीब मजदूर लोगों को उनकी जमीन दिलवाएं और जस्टिस दिलाने में उन गरीबों को हक में मदद करें, और रॉबर्ट वाड्रा को पर्दाफाश करें, अपने पति के पाप में साथ ना दे। प्रियंका गांधी देश की बेटी बनके रॉबर्ट वाड्रा को सजा दिलाने में साथ दे। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी ये तो बता दें कि 2014 से ये केस चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा साहब के खिलाफ, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक वो वैसे के वैसे ही फिर रहे हैं, मतलब तकरीबन 9 के 10 साल होने को आए हैं। तो कब होगा कुछ उसमें खुलासा? तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन भाजपा का कोई इंटरफेरेंस, ये जो कहते हैं ईडी में, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये प्रोफेशनल एजेंसीज है, ईडी में केस चल रहा है, ये ईडी अपना कोर्ट में विषय रखेगा, हमारा उसमें कोई, लेकिन ईडी का केस है, हमें ये पता है रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन हड़पी है, रॉबर्ट वाड्रा ने जबरदस्ती करके कल्यूजन करके हरियाणा सरकार के साथ गरीब मजदूरों की जमीन हड़पी है अपने कमर्शियल यूज के लिए। अब वो ईडी का विषय है कि वो कोर्ट में कब रखे विषय, भाजपा कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में इंटरफेयर नहीं करती है, यही तो है कि 9 साल हो गया हमने तो कोई इंटरफेयर नहीं किया, ईडी तय करे कितना जल्दी वो केस बढ़ाना। That's a very major point. Actually speaking, धीमा करना चाहती है। Actually speaking, Mr. Abhishek Mishra, that's a very major point. If suppose it is the BJP government at the center which have been guiding the ED in this matter, rightfully Mr. Robert Vadra should have been in jail long time ago. That's my point. And yeah, we correct. have no interference. There is no interference from the government or BJP in the investigating agencies. Otherwise, Robert Vadra should have been in jail on day one. We have given them free hand to take the cases to the court, give the evidences, and let the natural law take. Right. Oh, okay. That was an aside. That was an aside about Mr. Robert Vadra. I'm not really interested in what Mr. Vadra does. But what I am interested in, Mr. Abhishek Mishra, you mentioned a very important point, especially with regard to the caste-based census. Now, over here, the fear is, very frankly speaking, अभी हर जगह पे बात हो रही है caste-based census करो, caste-based census करो. यार इससे तो मतलब अलग-अलग जातियों में लड़ाई हो जाएगी. There will be an internal war in India. How do we prevent that? Abhishek Mishra ji. See, I explained it earlier also in the debate. Every caste should get its rightful due. Yes. The government is committed to that. Every caste group should get all their, whatever they are due based on the numerical state. All those things are good. BJP believes, that's why we have made a OBC commission. That's why we have made scheduled tribe a president of India. We made Ramnath Kovind scheduled caste a president of India earlier. Most of the member of parliaments of the OBC community, SC/ST community belong to BJP. We have made a maximum ministers on these communities. But we are there to empower all the caste groups. Even in the general category, economic weaker section should be hit. This is a clear stand. But we are not to spread poison of taking the root of casteism. This is what the INDI alliance is trying, what Rahul Gandhi is trying, what Nitish Kumar is trying. They are not for empowerment. They don't want to help the various caste groups. They are not interested in the welfare of OBC, SC, ST. No. Their only singular intention is to spread the poison of casteism, to create division, discord. And the only way out is that the people of India are going to stand solidly with Narendra Modi ji, and Modi ji will deliver justice to all the caste groups in India. The way forward is justice, not poison, which the Congress and Rahul Gandhi is trying. And Mr. Abhishek Mishra, in terms of the number of states that are going to polls now, because Mr. Modi is leading as usual, leading the BJP campaign everywhere, Telengana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, so where do you expect the BJP to be, say, when the results come out? See, we are very confident that in all the state elections, we will get a clear majority. We are also very confident that development mantra of Prime Minister Modi ji will be supported by people of all classes, all castes, all communities, all religions, across gender divide.
We are doing our best as a political party to convey our message across to the voters, and our Karyakartas are whatever vision has been decided by our Prime Minister has been taken to the voter. So we are doing our duty to tell the voter that this is the service we have done in the last 9.5 years under leadership of Prime Minister Modi ji, and in the future this is the service we will continue doing. And so we are very confident that we are going to get a majority in all the states. Mr. Abhishek ji, the Congress today, through its social media campaign, the Congress is saying the Gujarat model is not there. The BJP is talking about the Gujarat model, but there is no Gujarat model. The Gujarat model is a failure model. That's what the Congress says. The Congress says 1/3 of Gujarat is under poverty line. 1/3 of the Gujarat is under poverty line. They gave an example through their social media accounts of an Adivasi person who was sick, and he was waiting for an ambulance to come. The ambulance couldn't come because the roads were so bad. Kharab road. Ambulance was parked 1.5 kilometers far from his house, and he couldn't make it, and he died. That's it. This is the Gujarat model that Congress is talking, the BJP is talking about. And they're saying that 28 saal BJP was ruling Gujarat, and the roads are still not fine. Abhishek Mishra ji, they have debunked your Gujarat model. They say Gujarat model is not a role model. How will you respond to that? So, Pradeep ji, do you trust the voters of Gujarat or you trust the propaganda of Congress party? Whom do you trust? Fantastic, but there's questions. If somebody asks, you need to have a proper answer for that. The roads No, are I'll bad. give you the answer. First of all, whom do you trust? The people is The ultimate voters of Gujarat or the God. propaganda division of the Congress party? Whom do you trust? The people. Yes. So if the people have repeatedly given clear, decisive mandate to the BJP, you think they have given it because we have done development or not done development? Why would they vote us again and again? Please tell me. But if the roads are bad, if 1/3 My of the question is population very are clear. below the poverty In last line, 28 years, BJP has been coming back to power. It proves that the majority of the people of Gujarat are happy with the Gujarat model, happy with the development which the BJP has given them. It is so clear, simple. There is no logic left for this. In a democracy, if for 28 years a party is coming to power based on development model, and the majority is voting, that means there is a development model. It is a successful model. People have been benefited. Right, and Mr. Mishra, are you there? Okay, you're there. Yes, now, I'm there. Oh, lovely. So now the question arises. Of course, that argument can be stretched, because after all, if there is criticism, I'm reasonably certain the Gujarat government will reply, and they should. Why not? I mean, if some roads are bad, they should reply as to why these roads are bad, why have they not been taken care of, and so on and so forth. Now, coming to Maharashtra, after that thing about the announcement with regard to the Maratha reservation, where do we stand now? Because we see lots and lots of OBC agitations taking place all over the place. अब दंगड़ कम्युनिटी जो है वो भी सड़क पर आ गए हैं, कुनबी जो हैं वो भी सड़क पर आ गए हैं, तो अभी मतलब क्या होने वाला है आगे? मतलब ये this is a Pandora's box which is opened. No. See, we have given very clear statement. जी. As a party, Devendra Fadnavis ji has given that all caste groups will get justice in Maharashtra. Even the Dhangar committee had done a fast, the leader, and we have given him assurance. We have started the procedure. So my point is, even for the Maratha quota in Supreme Court, we are doing whatever is required. So people in democracy have a right to protest. Don't say that it is a Pandora's box. They have a right to protest. They have a right to request whatever their demands are. And we as a government, BJP as a party which is in government, Devendra ji is our leader, it is our responsibility to listen to the people's aspiration and try to do justice to them, depending on the overall situation. So, whoever is doing protest, we respect them. That's their right in democracy. Gee. And our leader Devendra ji has been very clear that we will listen to. Abhishek Mishra ji, there is confusing signals coming. When Sudhir Mungantiwar ji was in London, he talked about, he's a very seasoned minister and a very senior BJP leader. He talked about Ajit Pawar as the chief minister. And then he corrected himself. But again, Devendra Fadnavis ji here, I think yesterday when you were in the conclave, he said Ajit Pawar also can be the chief minister, and if he becomes the chief minister, he'll be there for 5 years. But the time is there. When the time comes, he will be there. And now Eknath Shinde ji is the chief minister, and he will be there. He will continue in complete. So this chief minister ke baare mein, from the BJP, there is continuous different messages going on. So
the people, you don't think the electorate will get confused कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? बीच में फडणवीस साहब बोल रहे कि हम बड़े भाई है तो सब याद रखेंगे हम बड़े भाई है. तो ये क्या हो रहा है अभिषेक मिश्रा जी? Why is conflicting signals coming out from the BJP? नहीं, इधर ना कंपटीशन. बीजेपी का स्लोगन क्या है आपको शायद पता ना. इट इज नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट. तो देवेंद्र जी हो, सुधीर जी हो, इनका ये कहना है कि वी आर नॉट aspiring for the CM's post. That is not our goal. Our goal is to serve Maharashtra. हमारे डिप्टी सीएम अजित पवार जी वो भी बन सकते हैं. देवेंद्र जी ये तो नहीं कह रहे कि मैं ही बनूंगा. उनका है कि मैं महाराष्ट्र की सेवा करूंगा. डिप्टी सीएम अजित पवार जी को बनना है वो बनने, वो तो हाईकमांड तय करेगा. उसी प्रकार सुधीर जी कह रहे हैं. ये तो भाजपा का नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट का जो विजन है वही देवेंद्र जी और सुधीर जी कह रहे हैं कि हमें सीएम पोस्ट के क्लेमेंट बनने में विषय नहीं है. अजित पवार भी हमारे डीसीएम वो भी बन सकते हैं. हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम कर ही रहे हैं, हमारे सीएम हैं. देवेंद्र जी सुधीर जी का एक ही लक्ष्य है कि महाराष्ट्र का विकास हो. सुधीर जी उसके लिए लंदन गए शिवाजी महाराज का बाग नखलाने के लिए. देवेंद्र जी दिन रात गांव घर घूम रहे हैं महाराष्ट्र में लोगों की सेवा करने के लिए. तो देवेंद्र जी और सुधीर जी सीएम पोस्ट के बारे में वो तो कह रहे हैं अजित पवार बन जाए, अच्छी बात है, महाराष्ट्र का हित हो जाए. देखिए भाजपा का एक ही मंत्र है, महाराष्ट्र का भला हो जाए. दुरुस्त बात. और यहाँ चलते चलते सर ये भी बताते जाएं, ये जो क्या है वो क्या है, कुछ न्यूज़ क्लिक करके कुछ है, न्यूज़ क्लिक जो न्यूज़ पोर्टल है उनके काफ़ी जर्नलिस्ट के ऊपर रेड हुआ. ये पाया गया है कि भाई चाइना से कुछ पैसा वैसा आया है वहाँ पे. एंड नाउ द बीजेपी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग एंटी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, that you have bottled up the freedom of the press, that you are censoring people, that this is an undeclared emergency. Abhishek Mishra ji. देखिए, investigative agencies have filed a serious case under UAPA against the person who was the chief of that news click portal. जी. This is a technical matter. It will go in the Can't hear you, sir. The investigative agencies have collected the evidence. Yes. So please try to understand. This is a serious matter. I am saying this is a serious matter about the security integrity of the country. The charge is very serious that they have taken Chinese funding to propagate Chinese government version in India. It's a serious matter. The investigative agencies will take it to the courts. Hello. Yes, I can hear you, sir. We can hear you, Mr. Mishra. Hello. Yes, Mr. Mishra, we can hear I am you. saying this is a serious matter. Yes, we heard that. We Investigative yes. agencies will take the evidence and the charges to the court. It's a very huge violation. It's a very huge charge that the newspaper portal has taken Chinese funding to propagate Chinese government version in our land in India. This is a serious charge. It is basically it's a national security charge, and UAP has been imposed on them. So the main guy has been arrested already. The other journalists have been interrogated. Now it will go to the court. Court will see the evidence. So I cannot comment on the technical part of it. It's a very serious charge, and the investigative agencies are doing their duty. Right. Thank you so much, Mr. Mishra. Thank you for joining us from the Grand Hyatt. I know you are there at the India Today conclave, but thank you very much for joining us, taking the time out for us. So nice of you. Namaskar, sir. Vande Mataram. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Thank you. Well, that's it in terms of the BJP. Mr. Abhishek Mishra, very, very clear that as far as the BJP is concerned, BJP is winning all 5 states. BJP is completely and totally and absolutely. What is that? Like, share, subscribe. Yeah, if you want to What subscribe. is that? Yeah. Okay. Pull your Like, finger. share and subscribe. Right. Yes. So subscribe to the channel. You can like it and you can also share it, and you can also please send in your comments. And That'd be subscribe nice. too. You need to subscribe. You need to subscribe. You see that bell icon there? Bell घंटी जो है, सब्सक्राइब करें, अच्छा होगा. हमारे लिए तो अच्छा होगा, आपके लिए कैसा होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन करें ज़रा. And but that's a serious matter. You know, Matthew Hayden propagating Islam in a cricket. There should have been a lot of furore where India's concerned. What's the matter with the fellow? I mean, We're taking it very lightly. Yes, maybe we should take it lightly because it's maybe not a very such a serious issue. Matthew Hayden maybe wants to get, you know, No, get you can't back to have coaching. You talk pro, there'll be a problem. You talk anti, there'll be a problem. That's right. If anti, there's a problem. Then there's pro, there's But a problem. you can't propagate any religion in a cricket commentary. You can't do that. And if you do that, the ICC will have to take a decision
on whether or not Mr. Matthew Hayden and Mr. Ramesh Raja should be allowed to continue commentating on World Cup matches. And this is a question for all of you. आप लोग इस विषय में क्या समझते हैं? मैथ्यू हेडन साहब ने इस्लाम की बड़ी तारीफ करी, रमीज राजा साहब नेचुरली उन्होंने भी बहुत तारीफ करी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। आपको क्या लगता है कि मैथ्यू हेडन साहब और रमीज राजा साहब को क्रिकेट कमेंट्री से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि धार्मिक प्रचार के लिए नहीं होता है क्रिकेट मैच, याद रख लीजिए। कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट धार्मिक प्रचार के लिए नहीं है। और अगर आप धार्मिक प्रचार करना चाहते हैं तो जैसा अभी अभिषेक मिश्रा जी ने कहा, भाई किसी मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, जहां मर्जी जाइए, वहां पर प्रचार कीजिए। यहाँ मतलब क्रिकेट कमेंट्री करते वक्त आप धार्मिक प्रचार क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझको। एनीवे, एट द मोमेंट विद अस द